अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो देखने जा रहे हैं विराट कोहली का इंटरव्यू, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। Make some noise for VK18.5. Okay, lights, camera, action, rolling. सब रेडी हैं? I was so excited because हम इतनी बार बैठे हैं और सबके मन में ये आता है ना कि यार sport, you're here because of sport. Everyone plays the sport. Let me ask you, start में, if Virat Kohli did not play a sport at any point in life, where would he be? I have no idea, honestly. मैंने बोला है 2-3 बार कि probably do some kind of business with my brother or some, because business was something that I saw growing up in the family. My path was different because of sport. So I say business because that's the only other thing I knew or I'd seen. अगर स्पोर्ट नहीं खेले, मैं स्पोर्ट बोल रहा हूँ स्पोर्ट्समैन बनने के लिए नहीं। डू यू थिंक कोई किसी भी प्रोफेशन में, लाइफ के किसी भी उसमें उतना सक्सेसफुल हो सकता है बिना स्पोर्ट्स के लेसन सीखे? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मे बी लोग हुए हैं सक्सेसफुल, बट जो वैल्यूज मुझे समझ आई है स्पोर्ट के थ्रू कि वो आपकी लाइफ में कैसी कंट्रीब्यूशन लाता है। कोई भी स्पोर्ट आप खेलो, इट्स नॉट ओनली क्रिकेट ऑब्वियसली इज लुक्ड एट फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस, स्पेशली हमारे देश में। बट कोई भी आप स्पोर्ट खेलो तो एक सर्टेन सेंस ऑफ डिसिप्लिन, एक सर्टेन सेंस ऑफ स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा किसी भी स्पोर्ट की। अगर आप टेनिस बॉल क्रिकेट भी खेल रहे हो तो आपको पहले स्टंप्स लानी पड़ेंगी, एक जगह आपको मार्क करनी पड़ेगी कि यार प्लानिंग है कुछ कि यहाँ पे खेलेंगे, ऐसे खेलेंगे, यू नो, इस तरीके से खेलेंगे, ये रूल्स होंगे, इस दीवार पे लगेगी तो आउट है, उस पे लगेगी तो सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इट ओपन्स अप अ साइड ऑफ यू व्हिच इज मेकिंग यू अ मोर प्रोडक्टिव पर्सन इवन व्हाइल प्लेइंग स्पोर्ट। फिजिकली तो आपका बेनिफिट हो ही रहा है, बट यू ऑल्सो हैव टू थिंक व्हेन यू वांट टू विन, you have to think, you have to plan. And that brings out more from people than what they imagine. तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट की वैल्यू किसी भी प्रोफेशन में आप हो, कोई भी स्पोर्ट खेलने की वैल्यू बहुत ज़्यादा इमेंस है। ये वो गली क्रिकेट की बात आ गई ना, इस दीवार पे आउट है, उस दीवार पे आउट है, एक बार चलते हैं गलियों में। हाँ, एक बार उन गलियों में चलते हैं। वही वन ऑफ दोस्त क्या बैट लेके जाते थे भाई, स्टंप्स लेके जाते थे या बॉल तो या पूरी किट थी? तो मैं एक्चुअली आई वाज जज्बाती किड बिकॉज आई लव प्लेइंग क्रिकेट। और हमारी जो सोसाइटी में रहते थे वहाँ सबको पता था। सो आई यूज्ड टू प्ले विद माय ब्रदर्स फ्रेंड्स, ही इज 7 years elder to me। क्योंकि मुझे अपनी एज के लड़कों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे लगता था यार मेरे को थोड़ा कंपटीशन चाहिए, राइट। आई जस्ट फेल्ट लाइक आई कुड प्ले विद दीज बिग बॉयज, सो दे स्टार्टेड मेकिंग मी पार्ट ऑफ देयर टीम्स एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग विद देम। तो उनको समझ आ गया कि इसमें तो बहुत ज़्यादा कीड़ा है क्रिकेट का। तो स्टंप्स हमारे घर पे होती थी, बैट हमारे घर पे होते थे, बॉल जो कॉस्को की हम खेलते थे उस टाइम पे वो हमारे घर पे होती थी, सब कुछ मैं लेके जाता था। और जब शीशा टूटता था सब घर भागते थे, मैं अकेला था ग्राउंड में, स्टंप्स वापस लेके जानी, आंटियों से भी डांट खानी मैंने, बॉल भी उनसे मांगनी, बैट भी लेके जाने। मैं कभी लड़ाई वड़ाई भी नहीं करता था किसी से, फिजिकल तो चांस ही नहीं। मैंने कहा कोई मुझे मार के निकल जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा, मेरा उसको नहीं पता क्या होना। तो आई नेवर यूज्ड टू गेट, यू नो व्हाट द फॉलो अप क्वेश्चन विल बी। आप मुंह से कुछ भी बुलवा लो, बट मैं फिजिकल लड़ाई ये सारे देख रहे, सबके ना जितने क्रू वाले सबके चेहरे पे स्माइल आ गई है। एक कह रहे सो अगर कभी भी वर्बल मेंशन चल रहा है, किसी ने आगड़ा होना चाहिए यार, रुक जा यार। वो भी मैं ग्राउंड पे करता हूँ, मुझे पता है वहां पे लड़ाई नहीं हो सकती ना, वहां पे अंपायर बीच में आ जाएंगे। First time ever we've gotten to this depth. Nice. What are some of the names that you remember? अब इसमें हो सकता है वो आंटियां जो गाली मारती थी या फिर मोहल्ले के बच्चों के वो निकनेम्स वगैरह। Let me see, how many can you remember? I remember quite a few actually with the जो क्रिकेट में हम लोग खेलते थे, मेरे भाई के दोस्त हैं। एक लड़का था, his name was बंटू, एक का बबलू। अभी मैं आपको सोसाइटी की बातें बता रहा हूँ। Then a really good friend of mine, his name was Jay Ganesh. He was the family was from South India and they used to live in our society. वो था एक्चुअली जिसने मेरे फादर को सजेस्ट किया था कि इसको आप अकेडमी में डलवाओ, बिकॉज उसको क्रिकेट का आइडिया था।
So he saw me play और उसने बोला था मेरे father को कि you should make him practice professionally. वहाँ से उनको insight आया. Then he asked me and I said yes, of course I want to. स्कूल में, क्योंकि अभी हम स्कूल पे आएंगे, क्योंकि ये कल्चर अगर चेंज करना है, आई थिंक द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट स्टेप आना चाहिए स्कूल में. What were some of your teachers? Were they विराट खेल, या फिर कुछ ऐसे भी थे कि विराट why are you missing classes? Early days before you were playing a lot of competitive stuff. I was in a school called Vishal Bharti, which was in West Delhi, because that's where I grew up. तो पश्चिम विहार एरिया है, वहाँ पे स्कूल वाज देयर. तो मैं 8th स्टैंडर्ड तक मैं वहाँ पे पढ़ा और क्रिकेट में खेलता रहता था. वहाँ से बहुत छुट्टियाँ भी मुझे लेनी पड़ती थी क्योंकि मैचेस होते थे. सो द टीचर्स वर वेरी कोऑपरेटिव. मुझे कभी भी ऐसा स्कूल में फील नहीं हुआ, एटलीस्ट एट द टाइम दैट आई वाज ग्रोइंग अप, कि यार बहुत ज़्यादा ना अकेडमिकली बहुत कंपेटिटिव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एटलीस्ट इन माई ओन एक्सपीरियंस. वहाँ से फिर वी मूव टू अ स्कूल कॉल्ड सेवियर कॉन्वेंट, क्योंकि हमारी वो भी वेस्ट दिल्ली में ही था, सिमिलर एरिया, बिकॉज हमारी क्रिकेट अकेडमी उस स्कूल में चलती थी. तो द स्कूल प्रपोज टू आवर कोच कि यू नो व्हाई डोंट यू गेट दीज kids into our school, we'll make a school team, we'll make a strong school team as well. So said it's a great idea, so we all joined and then we made a school team. Then we started playing school tournaments as well. Academy की अलग होती थी cricket, school की अलग होती थी, you know, और Salvan boys and your Gyan Bhartis and modern Barakhamba and all these teams were very strong. तो हमें वो tournaments खेलने को मिलते नहीं थे, तो फिर हमने अपनी टीम बनाई, उससे खेलना शुरू किया. तो वहाँ पे एक्चुअली मेरे साथ एक बार एक्चुअली बहुत कमाल का एक इंसिडेंट. हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम थी एंड शी यूज्ड टू टीच इंग्लिश एंड शी वाज वाइस प्रिंसिपल एंड सपोजिटली शी वाज अ वेरी यू नो स्ट्रिक्ट टीचर. एंड सो उनका मैंने जो क्लास मिस करके मैं बाहर वॉलीबॉल खेल रहा था और सामने क्लास से, बिकॉज द स्कूल वाज the classes were on the ground floor and she could see and the whole class could see, and I was playing with seniors in the school. I was playing volleyball with them and I totally forgot कि हमारा हाँ फिजिकल का पीरियड खत्म हो गया और ये शुरू हो गया और मैं खेल रहा हूँ and she didn't say anything to me. She came to me, she was like are you really interested in studying? I said, ma'am, if you ask me very honestly, I'm just doing this to pass my whatever grade I'm in. She said, where's your interest? I said, I love cricket. It's everything for me. She said, then follow that completely. Wow. Which standard is this? What class? I was in 11th. Okay. I had just finished the 10th boards and we had just gone into the 11th standard. And this is when the conversation happened. I was like, it was such a nice thing for me to hear that I wasn't being pressurized, you know. Sport की तरफ preference होनी चाहिए मेरे हिसाब से. जिनकी एकेडमिक्स की तरफ प्रेफरेंस है, बहुत से ऐसे बच्चे जिनको स्पोर्ट पसंद ही नहीं होता, यू नो, तो दे आर डूइंग देयर वर्क, बट देयर आर सम हु फील फोर्स्ड. तो उनके लिए कोई स्पेस ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे दे कैन आल्सो फील लाइक वी आल्सो आर अ पार्ट ऑफ द सेम इंस्टीट्यूशन, बट वी आल्सो हैव आवर ओन स्पेस, आवर ओन प्लेस टू ग्रो, आवर ओन इंटरेस्ट आर बीइंग टेकन केयर ऑफ. बेसिकली इसका सार, इट्स सिंपली पुट लाइक यू सेड, राइट, मेरा इंटरेस्ट है स्पोर्ट, सो दैट मींस इट्स अ सब्जेक्ट, राइट? यस. सो अगर साइंस सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो स्पोर्ट इज अ सब्जेक्ट. सो डू यू थिंक एक चीज, so let there be sport? I mean, just the campaign sounds so good, right? Yeah. For sports aficionados, sport is not एक हफ्ते का एक PE period. No. It's not extracurricular, right? What is it? If you were sitting and addressing maybe the school communities, what would you tell them? I would tell them, don't make them just play sport. Teach them. Because when I was growing up, I had no idea about rules and regulations of majority of the sports around me. Now when we play cricket, you understand the way the situation of the game is going. So as a fielder, when you're standing in the field, what distance should you be from the batter to make a difference here? Do you have to be 5 steps back, or do you attack 5 steps more? Because you can sense that he's trying to do this particular thing, the ball might land up here and you need to be physically fit enough to be in that place to eventually make a difference. Yeah. This is all learning. This is not happening by chance. It's not only fun and games. So what the important thing is to teach them the small details of what it means to play a sport. Playing a sport means you're totally aware in every moment. You're totally present with what's going on. It's not just ha ha he and kara and you have to be present. You have to do that thing with absolute commitment, with fine details. उससे आपको that same intent can be applied anywhere in life. Because once you're involved in that moment, you will give your best output, whether it's for sport, whether it's for work, anything.
it helps you in your attention span and to be able to focus so much. It's so underrated and people don't actually realize this about sport a lot of the times. That's why the people who end up playing sport at a higher level, आप किसी से भी पूछोगे, they are absolutely precisely focused and present in the most stressful moments. वो तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो लाइफ में. तो ये चीज़ सिखाई नहीं जाती है. स्पोर्ट को देखा जाता है सिर्फ मस्ती मजाक के लिए स्कूलों में. लेकिन आप अगर स्पोर्ट खिला रहे हो, अगर आप बास्केटबॉल खिला रहे हो, आप वॉलीबॉल खिला रहे हो, आप मैं बोल रहा हूँ कबड्डी खो खो कुछ भी खिला रहे हो, कुछ भी आप समझाओ उनको कि यार एंगल समझना क्या होता है, एक एंटिसिपेशन क्या होती है चीज. आप खो खो खेल रहे हो तो वो कहाँ किस तरफ टर्न लेगा, कौन सा बंदा अभी. सो यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली. आपकी सेंसेस इतनी ज्यादा डेवलप हो जाती हैं that you start becoming intuitive. I'm not kidding. I mean, through playing sport, I've become so intuitive because once you start perceiving the situation कि यार ये कैसा होगा, where would the situation lead to, and you always have that little bit of insight. अपनी gut feel से आपको कई चीजें feel होती हैं कि ऐसा करना चाहिए. And once you follow it and it happens, then you start trusting it in every situation, whether it's with people, whether it's with sport, whether anything, whether you're driving, you always get कुछ तो होता है कि oh, I need to be careful here. अपने आप ही आप थोड़ा. So all these things, my senses started developing way more after I started understanding how sport is played because मेरा उधर passion था. It was something that I absolutely loved doing. So I learned it very differently. For me, it was not fun and games. You tell me about leadership, Virat, and I mean, leadership is. That's why I just love doing these interviews, right? You just get to know so much more. Leadership एक अंदर knack होता है, but then you also see someone, you sometimes look up to someone. आपके लिए what was leadership? What you learned from sport, maybe anything? See, leadership, I learned from many people. I learned a lot from MS because I played majority of my career under him, the initial years. But in general, I feel leadership is firstly to be able to take responsibility for yourself. Right? If you can't take responsibility for yourself or for your own space, or for your own well-being, hygiene, whatever it is, you cannot take responsibility for any other person. I had this tendency in me to follow my heart and to go for things naturally. Was the reason why I could urge everyone else around me to go for it and tell them, it's fine. Trust me, it'll be okay. Because I've experienced it. It's not like I'm reading it off a book and saying, come on, we have to play with positive intent. I felt it, I've been there, I've succeeded, I've failed. I've learned from failures. But that has not stopped me from trying again. So it is when you get rid of the insecurities you have as an individual, you will be able to become firstly your own leader in your own space, and then be able to take responsibility for the others as well, so that if things go wrong, because the one thing that stops us from realizing how good we can be is failure, is insecurity, right? कि खराब हो गया तो, out हो गया तो, pass नहीं हुआ तो, job नहीं मिली तो, CV गया, क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, what if it doesn't go through, is the reason why you never really fully commit to it. So at a level where you realize, okay, I have tried this, I have seen ups and downs with it, now I can tell these people, go for it, I'm here, if it goes wrong, I'll take care of it, but don't stop trying. कोई ऐसा instance, because ज़रूरी नहीं है जो someone I look up to as a leader might have a way of life जो इंस्पायरिंग लगे, बट मेरे तौर तरीके अलग हो सकते हैं. It would take me time to buy into your theory. 100%. One thing I learned from MS and other people that I've seen lead also, you cannot make everyone happy all the time. This is the absolute truth. And why that happens is because certain individuals will not buy into the intensity of what you're saying immediately. So they try to find their own comfortable ways, which you have to ignore because the vision is priority. It's not saying कि मैं ऐसे चलाने वाला हूँ. नहीं, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ये प्लान है, क्योंकि ये प्लान मुझे लगता है कि हमें टॉप पे पहुंचाएगी. अब ये हमारा पाथ है. अब किसी को आपने बोलना है भागो, तो किसी को आप बोल सकते हो चल भाई उठ के भाग. किसी को आप समझाओगे या नहीं करेंगे ना तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करेंगे. वी आर नॉट मेकिंग द मोस्ट ऑफ आवर टाइम. यू इवेंचुअली वांट टू एंजॉय योरसेल्फ. All these small things matters. To get that guy around in a different way. But the goal is the same. He has to run, he has to run. लेकिन ये नहीं आप बोल सकते कि मैं तो नहीं करूँगा. क्योंकि वहाँ पे पहुँचने के लिए कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 लोग आपसे 10 गुना मेहनत करने को रेडी हैं. क्या कुछ ऐसा भी था? Some things that you maybe realize पीछे देखते हुए कि यार I could have done this better.
maybe as a leader I could have done this better, purely in hindsight? 100%. So I have no shame in accepting that I have made many mistakes when I was a captain. But the one thing I know for sure that I never did anything for my own selfish motives. That I can take guarantee of that from day one to the last day. कि मैंने एक भी काम वहाँ पे अपने लिए नहीं किया. मेरा एक ही गोल था कि टीम को कैसे आगे लेके जाना है. उसमें आपने डिसीजन सही लिया कि नहीं, I can totally accept it. You make mistakes, like you make errors when you play, you get out. That's a failure. Failures will keep happening. But intent was never in the wrong place. So I can absolutely take guarantee of that. और जब तक वो आपका सही जगह पे है, you will make mistakes, but you will learn from them. As I said, you will not then start shying away from making mistakes. So मेरी नीयत हमेशा सही थी. तरीका जैसे मैंने आपको बोला वो ट्वीक करना पड़ता है लोगों के हिसाब से. डिसीजंस काफ़ी बार गलत भी हुए और वो चीज़ें आपको सिखाती है बहुत कुछ. और देन यू स्टार्ट टेकिंग इट एज द होल जर्नी एंड व्हाट वेंट वेल, व्हाट डिडंट गो राइट, एंड देन यू लर्न फ्रॉम ऑल सिचुएशंस. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू मी. अमेजिंग. ये जर्नी की बात की, ऐसी तो किसी की आज तक जर्नी नहीं हुई. और अगर सब कुछ अच्छा चलेगा तो फिर मजा ही नहीं. फिर मजा ही नहीं, right? You realize this is subject relativity, right? 100%. So I've got a couple of images that I want to show you now that we talk about the 2.5 years, which were weird, which were different. And उसमें I want to find out कि process क्या थी, वो 2-2.5 साल की process क्या थी. Correct me if I'm wrong. On the outside, whatever I try to look like disbelief. No, it can't be happening. Reluctant acceptance, and then revival. And this photo, I think, defines it pretty well. I remember I was on commentary as well. And सबको लग रहा था यार इस नॉक में. And वो face define हो रहा था, अच्छी shots, catches में जा रही थी. But never seen you like that. Your reaction going back, ऊपर देख के कि ये हो गया रहा है. Just first tell me about this photo, this moment, and then we'll talk more. How do I put it? I mean, things turning around in a way that they did ever since I came back was because I decided to step away and really deeply connect to myself again. Doing things from a very superficial point of view, which is who am I to people? What are they expecting of me? What am I expected to go and do? It was never about how I'm feeling, what I want to do. In this moment, what is it that I really want to do, which is close to my heart. When you go into this phase that I went into, the focus is very difficult to stay in the middle lane, which has gotten you to the place that you are. That is exactly what happened with me. Because my focus shifted, I started looking at the situation differently. I was in the wrong lane. When I came back to my lane that I'm closest to, everything started flowing again. Because I'm not thinking about this part of what I do. Hopefully, I will keep being in this space that I will drift, but then you come back very quickly because you've had a knock on your head and a big one. So it's a blessing that I was able to get so much of grace and learning through that phase. यहाँ से चलते हैं अगली फोटो की तरफ. This is the Asia Cup, ladies and gentlemen. What was your first reaction? Just take me. हम भी सब खड़े थे, T20 format. You also said this is where you least expected, and then things are flowing. When did the 100 come into your head? To be very honest, the ball before I got to the 100 is the time I felt like, oh, I'm on 94, I could probably get this, and the next ball went for 6. But the thing is that as soon as I got the 100, I laughed so hard. मैं इसके लिए रो रहा था 2 साल से. Like that, just for this 2 seconds. I let myself go through that. That moment happened, it ended. Next day, the sun was up again. It wasn't going to be forever. It's not like वो 100 बना दिया, अब मैं pause कर दूंगा और मैं इसी moment को पूरी जिंदगी Groundhog Day की तरह. It was so funny. I laughed so hard. I was like, बस यही था. But you laughed, I'm sure there must have been tears as well because you guys... Not at that moment, but when I spoke to Anushka, yes. Later it was. Because I know, beyond the point, जब बंदा इस level पे पहुंच जाता है, milestones keep happening. Yeah. But जिस विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को कंधों पे उठाया था,
2nd April को और कहा था that we'll carry this forward. If you are to tell that Virat Kohli, maybe when you get to Paji's record or one ahead, उसके लिए तो बहुत मायने रखेगा. 49 one-day centuries. 2011 में तो नहीं ये सोचा होगा ना. I'm sure चांस ही नहीं है. So if you have to tell him, I know Abhi you will play it down. When this happens, you will play it down. It'll be a very emotional moment for me. Yeah. क्योंकि again, people take for granted what has happened. Whether it's your journey from when you were a kid watching your idol play on TV, to playing with him, to seeing his retirement, to carrying on the responsibilities, to a point where I am today, and what you just mentioned. It is surreal. I mean, again, the focus can be, oh yaar, abhi itne match ho gaye. But I'm looking at exactly what you're saying. I know when I used to be on a scooty going around playing games and trying to make a mark. I don't forget those days. I can still feel it. It's like living for me even now. The people on the outside have no idea what I'm not saying that my journey has been so difficult. No, it's dear to me. I'm not saying कि मैं बहुत बेचारा आदमी हूँ और मेरे को कुछ मत बोलो. They don't have an understanding, so they'll say what they have to. But I know who I am. I know where I've come from, and I know what path I have to go. And honestly, these things do not matter to me in a achievement sense. They matter to me because the dream you had as a child, you see that unfolding in front of your eyes, and that is a blessing. That is a true blessing because you're able to work towards it. Again, the beauty of being in my profession, playing a sport, is that it didn't happen by chance. The blessing was there on your head. The hand was always there, but the hard work was the only thing that was in or given to you to do. Nothing else is in our control. We can only do things with the right intent, with the right output. बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था और एक विराट कोहली की जर्नी जानना ना, एक जानकर या उनका एक कैसी जर्नी गुजरी है वो काफ़ी एक अच्छा लगता है। और जैसे आज उन्होंने एक अपने बचपन के बारे में बताया कि कैसे एक खेलना स्टार्ट किया या क्रिकेट में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट था और कैसे होता है। और वाकई जब एक दोस्त इकट्ठे होकर सोसाइटी में खेलते हैं तब तो वहाँ पर कभी इधर बॉल चली गई, कभी इधर, कभी शीशा टूट गया, कभी कुछ। लेकिन तब उन्होंने सही बोला है कि तब मैं खुद ही जाकर एक सबका सामना करता था, बॉल लेकर आता था और बाकी जो सामान होता था ना वही लेकर जाता, जिसको सबसे ज़्यादा एक शौक़ होता है उस गेम का। जैसे अब क्रिकेट का था तो जो भी उसमें एक सामान वगैरह आना उन्होंने लेकर जाना वो काफ़ी अच्छा था। या उन्होंने जो एक बात बताई है ना, ठीक है मैं लड़ाई भिड़ाई में मेरा कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं और मैं कभी ये कर भी नहीं सकता, लेकिन ग्राउंड में इसीलिए करता हूँ वहाँ काफ़ी ज़्यादा एक पाबंदी होती है, एम्पायर होते हैं तो ये करना मुश्किल होता है। वो वाला काफ़ी अच्छा था उनका। नहीं वाकई वो एक काफ़ी एक फ़नी थी उनकी बात। लेकिन आगे एक विराट कोहली पर आ जाए ना तो भाई एक कमाल के मतलब कि एक बैट्समैन और कमाल का उनका एक कैरियर अभी तक भी एक कंटिन्यू है। लेकिन आगे एक बातों पर आ जाए ना तो वो एक हर बंदे की एक ख्वाहिश होती है, ख़ास करके जो एक विराट कोहली के एक फ़ैन है ना पूरे एक वर्ल्ड में, जहाँ जहाँ भी क्रिकेट खेली जाती है या लोग जानते हैं तो वो इस चीज़ का वो ज़रूर उनको मतलब कि एक क्रेज़ होता है कि यार हम पूछे कुछ बातें मतलब कि उनके जानने की हमें मिले कि वो एक कैसे। अब देखो ना एक हर कामयाब बंदे के एक पीछे बहुत एक हार्ड स्टोरी होती है, बहुत एक स्ट्रगल होती है। हम बंदे देखते हैं कि जब एक बंदा एक कामयाब हो जाता है कि वो स्टार बन जाता है तो हमारी भी सोच होती है कि यार इतना जल्दी हम भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 1-2 दिन बस ये करते हैं जिनको जोश आता है, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म। लेकिन भाई एक विराट कोहली ने बहुत एक स्ट्रगल किया है एक स्टार से। जैसे एक हमने उनकी काफ़ी स्टोरी एक सुनी हुई है हर इंटरव्यू में, लेकिन एक डिफरेंट होती है एक बहुत। लेकिन उन्होंने सही बोला कि अगर मैं किसी और एक जाता ना मतलब कि एक बिजनेस में चला जाता या किसी और पेशे में चले जाता तो इतना मैं एक मतलब कि एक सक्सेसफुल नहीं होता।
नहीं ऐसे ही है, लेकिन ये कि एक जो है ना वो मतलब आज का इंटरव्यू थोड़ा उनका डिफरेंट इसलिए था कि आज वो बहुत खुल के बोले हैं, और जो है ना वो मतलब दूसरे को तो इतना एक आध क्वेश्चन उसने किया, लेकिन बचपन के हवाले से अगर बात करें तो वो वाकई उनका एक थोड़ा डिफरेंट रहा है, और एक बहुत ज़्यादा मेहनती, लेकिन क्रेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ के अंदर। कोई भी एक टाइमली अगर आप चूज़ कर लेते हैं अपने कैरियर की या अपनी लाइफ से रेलिवेंट कि मैंने इसी फील्ड में एक जो है ना वो कोशिश करनी है, तो कहीं ना कहीं जाके वो मुकाम हासिल हो ही जाता है। लेकिन ऑन ग्राउंड आप देख लें इनका थोड़ा सा एक डिफरेंट रवैया है, लेकिन आप जो है ना वो एक्चुअली में आए तो वहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल वो डिफरेंट सोच रहे होते हैं। लेकिन ये कि भाई एक बहुत ज़्यादा उनकी एक मेहनत है इस मकाम तक पहुँचने के लिए, और वाकई उन्होंने भाई एक बहुत सारी एक जो है ना वो ना इम्पॉसिबल चीज़ें जो है ना वो करके भी दिखाई, लेकिन दो जगह के ऊपर भाई जहाँ पे उन्होंने तस्वीर दिखाई है कि यहाँ पे आपके अंदर क्या हाँ। एक जो है ना उस वक्त चल रहा था ज़हन में, तो वाकई एक बिल्कुल एक सिचुएशन डिफरेंट होती है ग्राउंड के अंदर जब एक कोई चीज़ अचीव होती है तो उस वक्त। लेकिन ये कि एक सबसे बड़े राज का पता यही चला है कि भाई जब वो एक एग्रेशन थोड़ा दिखा रहे होते हैं ग्राउंड के अंदर, तो वो यही समझ रहे होते हैं कि यहाँ पे मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, लिहाजा वो एक लड़ाकू नहीं है, और एक बिल्कुल वो कोशिश करते हैं कि कोई इस तरह का सीन क्रिएट ना हो, जो कि उन्होंने कहा कि मेरी कभी किसी के साथ इस तरह का सीन नहीं हुआ, और उधर भी इसलिए होता है कि कोई भाई आके कैमरे के सामने मेरे साथ कोई इस तरह करेगा भी नहीं। अच्छा इंटरव्यू था। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।